12th. And dear students, in our today's live lecture, we will discuss about the syllabus regarding the term 1 examination for class 12th regarding the subjects biology, political science, history, computer science, as well as Hindi. So let us start with our term 2 syllabus for session 2022 regarding the class 12th, and the main subjects are biology, pole science, history, computer science, and Hindi. So let us start with our first subject regarding the class 12th for the term 1 examination for the session 2021-22, and our first subject is biology subject for class 12th, and the duration for the biology subject is 3 hours. Time hours is 3 hours, and the maximum marks is 50 marks. And here beta, regarding the term 2 for the biology subject, your syllabus started from chapter number 8, chapter number 10, chapter number 11, chapter number 12, chapter number 13, and chapter number 15. That means there are total 6 chapters for the biology subject for the second term examination, and your chapter number 8 is human health and diseases. Chapter number 10 is microbes and human welfare, and your chapter number 8, that is human health and diseases, it is of 10 marks. And next chapter is chapter number 10, that is microbes and human welfare, and the distribution of marks is of 8 marks from this chapter. Next is chapter number 11, that is biotechnology, principle and processes, and the distribution of marks is of 7 marks from this chapter. Next is chapter number 12, that is biotechnology and its applications, and the total distribution of marks from this chapter is 7 marks. Next is chapter number 13, and the name of the chapter is organisms and population, and the total distribution of marks from this chapter is 10 marks. And the last chapter, that is chapter number 15, and the name of the chapter is biodiversity and conservation, and the total distribution of marks from this chapter is 8 marks. So here the total comes out to be 50 marks from all the chapters, and the chapters started from chapter number 8 to chapter number 15. So this is the distribution of marks from each and every chapter. Next is, what is the paper pattern for the biology subject? So beta, there are 2 sections in question paper. One is section A and second is section B. That means the paper of biology is divided into 2 sections, section A and section B. Section A, it has 20 questions. Section A, it has 20 questions, and each question carries 1 marks. That means these questions are objective type questions or multiple choice questions, and the questions started from question number 1 to question number 20. Total 20 questions, and the distribution of marks is 1 marks for each question. And second is section B, and your section B is, section A has 20 questions of 1 mark each. Section B has 11 questions. Section B has 11 questions. Section B has total 11 questions. And questions started from question number 21 to question number 31. That means there are total 11 questions, and question number 21 to 27. Question number 21 to 27. Question number 21 to 27. Total 7 questions, and these are short answer type questions, and each question carries 2 marks. हर एक क्वेश्चन का जो होगा वो 2 मार्क्स रहेंगे. टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे. क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कैरी करेगा 2 मार्क्स को. Next is the question number 28 and question number 29. That means there are 2 questions, and these are long answer type questions, and each question carries 3 marks. Each question carries 3 marks.
2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो होगा वो 3 मार्क्स रहेंगे. Next is the question number 30 and 31. Again, there are total 2 questions and these are very long answer type questions. ये very long answer type questions रहेंगे और हर एक question जो होगा it carries 5 marks each. And the last one is बेटा there will be internal choice. Internal choice भी रहेगी. That is from question number 24, question number 26, question number 28 and question number 31. That means there are total 4 questions that carries internal choice. And these questions are question number 24, question number 26, question number 28 and question number 31. तो इस तरह से बेटे ये बायोलॉजी पेपर का जो होगा वो पेपर पैटर्न रहेगा. 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए जो होगा इट कैरीज 20 questions or 1 marks each. Section B has total 11 questions and questions that started from question number 21 to question number 31. Question number 21 to 27, total 7 questions there. And these are short answer type questions and each question carries 2 marks. Question number 28 and 29, total 2 questions and these are long answer type questions and each question carries 3 marks. Next, question number 30 and 31, these are again 2 questions and these are very long answer type questions and each question carries 5 marks. And there will be internal choice given in question number 24, question number 26, question number 28 and question number 31. That means there are total 31 questions from biology paper. Next is the syllabus for the subject that is computer science for class 12. Marks distribution for the second term examination March 2022. Here this is the name of the chapters and here this is the marks allotted for each chapter. There are 3 chapters for the computer subject, chapter number 5, chapter number 6 and chapter number 7. Chapter number 5 is RDBMS Concepts and MySQL. Marks allotted for this chapter is 17 marks. Next is the chapter number 6, that is PL/SQL. And the marks allotted for this chapter is 15 marks. Next, chapter number 7, that is Internet Business Applications, and the marks allotted for this chapter is 18 marks. So total marks are 50 marks for the computer subject, 20 objective questions plus 30 descriptive questions. 20 are objective questions. 20 objective questions plus 30 descriptive questions. So beta here 3 chapters for the computer subject, chapter number 5, chapter number 6 and chapter number 7, and the marks allotted for these chapters, that is chapter number 5, the marks allotted 17 marks, chapter number 6 marks allotted is 15 marks, and the chapter number 7, that is the Internet Business Applications, and again this chapter marks allotted is 18 marks. Total distribution of marks is 50 marks, 20 objective questions plus 30 descriptive questions. Next is final syllabus for the computer subject. Chapter number 5, that is RDBMS Concept and MySQL. And the topics, again this chapter, are basics of database systems, problems in traditional file-oriented approach, 3-level architecture of DBMS, advantages and disadvantages of RDBMS SQL statements, DDL statements, DML statements, DCL statements, TCL statements, and the last one is SQL functions. These are the various topics against the chapter, that is the chapter number 5, RDBMS Concepts and MySQL. Next is chapter number 6, that is PL/SQL, and the topics against the chapters are PL/SQL block structure, basis of PL/SQL controlling, PL/SQL flow for execution, if statements, if then else, statements, execution flow, if then else if, statement, execution flow, loop statement, basic loop, for loop and while loop.
Good evening, beta. Adhunika, beta. So, beta, this is the chapter number 6, that is the PL SQL and the various topics against this chapter that are mentioned here. And next is chapter number 7, that is the Internet Business Applications. And the various topics against this chapter, that is the Internet Business Applications, concept of online services, e-commerce practice, net banking, various kind of online reservations such as railways, hotels, social networking with Facebook, etc. So all these are the various topics that fall under the chapter number 7, and the name of the chapter is Internet Business and Applications. So this is the final syllabus for the computer subject, and next is the distribution of marks for the computer subject. First is types of the questions. First question is true and false. Good evening, Abhunika beta. So first question is true and false. And there are 10 questions from true and false. And here the question number is question number 1, जिसमें ट्रू और फॉल्स रहेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे. हर एक क्वेश्चन का जो होगा वो 1 मार्क्स रहेगा. टोटल 10 क्वेश्चन हैं, सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑफ 10 मार्क्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो रहेगा कंप्यूटर सब्जेक्ट में, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द मार्क्स पर क्वेश्चन इज 1 मार्क्स and the total marks is of 10 marks. Next is question number 3, and the type of question is very short answer questions. This is question number 2. ठीक है, 2 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में वो टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे. क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा इसमें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4A एंड क्वेश्चन नंबर 6A. मार्क्स पर क्वेश्चन जो होंगे दैट इज 2 मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स इज 4 मार्क्स. क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, टोटल 2 क्वेश्चंस है, तो टोटल जो होंगे वो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा इस क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में वो रहेंगे 4 मार्क्स के. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे. क्वेश्चन नंबर जो होंगे that is question number 3A, question number 5A and question number 6A. Good evening, Muskan, Ishant beta. Question number 6B. Marks per question जो रहेंगे बेटे that is 3 marks. Next total marks जो रहेंगे इनमें वो आपके 9 marks के रहेंगे very short answer type questions में. Number of questions इसमें 3 questions आएंगे. 3 questions जो होंगे बेटे आपके. Good evening मोहित बेटा. Question number 3, question number 5, question number 6. मार्क्स पर क्वेश्चन जो रहेंगे वो 3 मार्क्स रहेंगे. टोटल मार्क्स जो होंगे बेटे वो 9 मार्क्स रहेंगे. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 रहेंगे. और इसमें जो क्वेश्चन नंबर आएंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 6C. मार्क्स पर क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 मार्क्स हैं. 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स करेंगे. तो टोटल मार्क्स जो रहेगा इन क्वेश्चन का बेटे दैट इज 12 मार्क्स. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे. वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 ही होगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा. एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3B. मार्क्स पर क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स होंगे बेटे दैट इज 5 मार्क्स. तो इस तरह से बेटे टोटल क्वेश्चंस कितने बन गए आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में. 10 + 10 20, 20 + 2 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28 and 28 + 1 29. So total there are 29 questions in your computer subject. Questions के नंबर जो रहेंगे वो कितने रहेंगे बेटे, that is 6 questions. ठीक है, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, that is of 50 marks. And that is 50 marks. And 30% chapter-wise syllabus detected by the Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala has not been included for the second term examination March 2022. इसमें जो 30% chapter-wise जो syllabus detected हो गया है बेटे according to the HP Board of School Education Dharamshala, that is not to be included in the second term examination March 2022.
So next beta, it is your 30% reduced syllabus. Chapter number 5, that is RDBMS, concept and MySQL. टॉपिक्स जो रहेंगे इस चैप्टर के अगेंस्ट बेटे, दैट इज रोल्स ऑफ डीबीए, दैट इज पेज नंबर 165 से लेके 166 तक रहेंगे. डाटा डिक्शनरी है, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 167 टू 169. कंसंट्रेट्स है, दैट इज इंटीग्रिटी कंसंट्रेट्स है, दैट इज पेज नंबर 170 टू 173. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कीज जो रहेगा बेटे, दिस इज चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 टॉपिक का है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ कीज. एंड अंडर दिस चैप्टर द पेजेस स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 212 टू 214. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, दैट इज PL SQL. 6.9, दैट इज ट्रिगर्स. इसमें पेज नंबर जो रहेंगे बेटे, दैट इज 243 टू 244. नेक्स्ट इज 6.10 रहेगा, दैट इज कर्सर. और इसमें जो पेज रहेंगे बेटे, दैट इज पेज नंबर 244 टू 246. ये ध्यान रखना है आपने. चैप्टर नंबर 7 जो है बेटे, दैट इज इंटरनेट बिजनेस एंड एप्लीकेशन. 7.6 ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स है, पेज नंबर 260 टू 262. Customer support services, that is page number 263 to 265. Online marketing and shopping, that is page number 265 to 266. So this is the 30% reduced syllabus regarding the computer subject. Next syllabus है बेटा for class 12, subject is history. Better, this is the syllabus for the class 12 regarding the second term examination for the session 2021-22, and your chapter number 9, chapter number 11, chapter number 12, chapter number 13 and chapter number 15. So total there are 5 chapters for the history subject regarding the second term examination for the session 2021-22. And your chapter number 9, and the name of the chapter is Shashak और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार, the Mughal court reconstruction histories through quarantines. Next is your chapter number 11, that is विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, representations of 1857. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 12, औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, colonization and Indian towns, towns plans and municipal records. Next is your 13 chapter number, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्पररी आइज. चैप्टर नंबर 15, संविधान का निर्माण मानचित्र. यूनिट्स आपके इसमें आएंगे 9, 11, 12, 13. द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैप वर्क. यूनिट्स आर 9, 11, 12 एंड 13. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर द हिस्ट्री सब्जेक्ट. दिस इज द पार्ट नंबर A, B, C, D and E. That means there are total 5 parts, part A, part B, part C, part D and part E. Question number, part number A के जो आपके क्वेश्चन नंबर रहेंगे, that is from question number 1 to 10. Nature of questions जो होंगे बेटे, that are MCQ questions, multiple choice questions, and each question carries 1 marks. Total there are 10 questions, so here the total distribution of marks is of 10 marks. 1 into 10, that is 10 marks. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर ए का ही सेकंड पार्ट जो रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 टू 15. जो क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 होंगे बेटे, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स. 1 to 10 जो होंगे वो आपके क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स इज ऑफ 10 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट रहेगा इसका, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 15. आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ये 5 क्वेश्चंस होंगे. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज
5 मार्क्स। पार्ट नंबर बी जो रहेगा बेटे उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, source based questions, and this question carries 5 marks। टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे बेटे वो रहेंगे आपके 5 मार्क्स के, ठीक है। तो कितने मार्क्स बनेंगे, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इज पार्ट सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 to 20। क्वेश्चन नंबर इसमें कितने रहेंगे, 17 to 20, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, पर आपको कोई डू एनी 3, कोई 3 क्वेश्चंस करने होंगे, डू एनी 3 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा इट कैरीज 3 मार्क्स, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 3 मार्क्स रहेंगे। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा बेटे, 9 मार्क्स का। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी है, पार्ट नंबर डी होगा आपका 21 से लेके 23 तक। ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे बेटे, दीज आर वेरी लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस। तो इसमें 3 क्वेश्चंस में से कोई आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, वेरी लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस टोटल होंगे 21 से लेके 23 तक, कोई आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। मार्क्स जो होंगे क्वेश्चन के दैट इज 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। ये टोटल 2 क्वेश्चंस करने होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा दैट इज 8 × 2 = 16। लास्ट पार्ट जो है दैट इज पार्ट ई। पार्ट ई में आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, एंड these questions are map based questions। ये map based questions रहेंगे बेटे आपके, these are map based questions, ठीक है। और these questions carries 5 marks, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन इसमें से करना होगा, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 5 मार्क्स, हेंस द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 50 मार्क्स। नेक्स्ट इज आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज द सिलेबस फॉर द हिंदी सब्जेक्ट रिगार्डिंग द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2021-22। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 50 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। सबसे पहले प्रकरण पाठ्य विषय है, अंतराभाग 2 पद्य खंड है। इसमें बेटे आपका आधुनिक कवि पाठ नंबर 5 विष्णु खरे सत्य एकम, आधुनिक कवि पाठ नंबर 6 रघुवीर सहाय तोड़ो बसंत आया, प्राचीन कवि पाठ नंबर 9 विद्यापति पद। गद्य खंड में बेटे पाठ नंबर 7 निर्मल वर्मा जहां कोई वापस नहीं, पाठ नंबर 9 ममता कालिया दूसरा देवदास, पाठ नंबर 10 हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटुज। तो इस तरह से बेटे अंतराभाग 2 पद्य खंड में जो टोटल आपके पाठ रहेंगे वो रहेंगे पाठ नंबर 5 से लेके पाठ नंबर 10 तक। दूसरा है अंतराल भाग 2 पूरक पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 4 अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता में, अभिव्यक्ति और माध्यम जन संचार माध्यम और लेखन पाठ नंबर 2 पत्रकारीय लेखन के विविध रूप और प्रक्रिया, पाठ नंबर 3 जो होगा बेटे विशेष लेखन है स्वरूप और प्रकार, अभिव्यक्ति और माध्यम सृजनात्मक लेखन है, पाठ नंबर 6 कैसे लिखे कहानी, रचनात्मक लेखन पत्र प्रार्थना पत्र लेखन, रचनात्मक लेखन निबंध लेखन, अपठित बोध अपठित गद्यांश बोध, अपठित बोध अपठित पद्यांश बोध। अब प्रश्न पत्र प्रारूप किस तरह का रहेगा बेटे, इसमें प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है वो किस तरह का रहेगा, अनुभाग, प्रश्न संदर्भ है, कौशल प्रकृति, प्रश्न संख्या क्या रहेगी, प्रश्न का प्रकार क्या रहेगा, भाग क्या रहेंगे, अंक प्रतिभाग क्या होगा और अंक क्या होंगे। तो जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें अनुभाग, प्रश्न संदर्भ, कौशल प्रकृति, प्रश्न संख्या, प्रश्न प्रकार, भाग, अंक प्रतिभाग, अंक। सबसे पहला अनुभाग जो है वो है अपठित बोध। अपठित बोध के संदर्भ में जो प्रश्न संदर्भ रहेगा वो है आपका अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश।
कौशल प्रकृति जो रहेगी बोधात्मक और बोधात्मक। प्रश्न संख्या अपठित गद्यांश बोधात्मक जो होगा वो प्रश्न संख्या 1 रहेगी। अपठित पद्यांश की जो प्रश्न संख्या रहेगी वो 2 रहेगी। प्रश्न का प्रकार किस तरह का रहेगा? अपठित गद्यांश का जो प्रश्न प्रकार होगा वो है बहुविकल्पीय। अपठित पद्यांश का प्रश्न प्रकार जो होगा वो भी बहुविकल्पीय। भाग क्या रहेंगे? अपठित गद्यांश का भाग 5 और अपठित पद्यांश के भाग 4। अंक प्रतिभाग क्या होगा? एक एक नंबर। अंक कितने बनेंगे? 5 होंगे उसके प्रश्न, 4 इसके होंगे, तो 5 हर एक प्रश्न का 1 नंबर होगा, तो कुल अंक कितने बन जाएंगे? 5 अंक बन जाएंगे। और बहुविकल्पीय में 4 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो जो जोड़ होगा अंकों का वो क्या रहेगा? 4। रचनात्मक निबंध लेखन, रचनात्मक कौशल प्रकृति रहेगी। प्रश्न संख्या जो होगी वो 3। प्रश्न का जो प्रकार रहेगा वो निबंधात्मक होगा। भाग 1 प्रश्न होगा। अंक का प्रतिभोग जो होगा, प्रतिभाग जो होगा वो 3 नंबर का रहेगा। कुल अंक जो रहेंगे वो 3 अंक रहेंगे। आगे है लेखन, पत्र प्रार्थना, पत्र लेखन, कौशल प्रकृति रचनात्मक। प्रश्न संख्या जो होगी वो 4। प्रश्न का प्रकार जो रहेगा वो निबंधात्मक। भाग 1 प्रश्न रहेगा। अंक का प्रतिभाग जो होगा वो 3 अंक का रहेगा, और कुल अंक जो रहेंगे वो 3 अंक रहेंगे। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, प्रश्न का जो संदर्भ रहेगा, प्रश्न संदर्भ जो है वो अभिव्यक्ति और माध्यम। कौशल प्रकृति ज्ञानात्मक। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न का प्रकार जो होगा वो बहुविकल्पीय। भाग 3 प्रश्न रहेंगे। अंक का प्रतिभाग जो होगा वो 1 नंबर का होगा, और कुल अंक जो होंगे वो 3 अंक रहेंगे। अनुभाग लेखन, प्रश्न का संदर्भ अभिव्यक्ति और माध्यम, काव्य की प्रसंग व्याख्या। कौशल प्रकृति व्याख्यात्मक। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न का प्रकार जो होगा वो निबंधात्मक होगा। कितने प्रश्न होंगे? भाग 1। ठीक है। अंक का प्रतिभाग क्या रहेगा? 3। कुल अंक कितने रहेंगे? 3। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र प्रारूप है बेटे हिंदी विषय का। अंतरा भाग 2 काव्य, प्रश्नोत्तर काव्य भाग अंतरा भाग 2, ज्ञानात्मक भाग 8, प्रश्न प्रकार लघु उत्तरीय, अंक 2 2 और कुल अंक जो रहेंगे वो 4। साहित्य कवि परिचय अंतरा भाग 2, ज्ञानात्मक भाग 9, बहुविकल्पीय रहेंगे 2 1 और 2। बोध कवि की साहित्यिक विशेषता, काव्य सौंदर्य 11 अंतरा भाग 2, समीक्षात्मक 10, लघु उत्तरीय 1 2 और 2, काव्य सौंदर्य 11 अंतरा भाग 2, बहुविकल्पीय 3 1 और 3, विश्लेषणात्मक गद्य जो रहेगा वो प्रसंग गद्यांश व्याख्या रहेगी, व्याख्यात्मक होगा, भाग 12 रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 1 3 और 3, साहित्य गद्यांश भाग अभ्यास प्रश्न अंतरा भाग 2, ज्ञानात्मक 13, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2 2 और 4, बोध लेखक परिचय अंतरा भाग 2, लेखक की साहित्यिक समीक्षात्मकता विशेषता अंतरा भाग 2, ज्ञानात्मक है 14 भाग, अति लघु उत्तरीय 3 1 और 3, 15 लघु उत्तरीय 1 2 और 2, स्वतंत्र भाषिक अभिव्यक्ति अनुपूरक पुस्तक अंतराल भाग 2, स्वतंत्र चिंतन 16 भाग, निबंधात्मक 1 3 और 3, अभ्यास प्रश्न कुल अंक जो रहेंगे वो 50 अंक रहेंगे। प्रश्न कौन कौन से रहेंगे? वर्गीकरण, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, रचनात्मक, व्याख्यात्मक, समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक, स्वतंत्र चिंतन। वर्गीकरण ज्ञानात्मक जो रहेगा उसमें अंक 19
अंक रहेंगे, बोधात्मक में 9 अंक रहेंगे, रचनात्मक में 6 अंक रहेंगे, व्याख्यात्मक में भी 6 अंक रहेंगे, समीक्षात्मक में 4 अंक रहेंगे, विश्लेषणात्मक में भी 3 अंक रहेंगे और स्वतंत्र चिंतन में भी 3 अंक रहेंगे। इस तरह से कुल अंक जो होंगे वो 50 अंक रहेंगे। प्रश्न का प्रकार क्या रहेगा? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे वो 17 अंक के रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 3 अंक के रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे 18 अंक के रहेंगे और जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो 12 अंक के रहेंगे। तो इस तरह से कुल अंक कितने हो जाएंगे? 50 अंक हो जाएंगे। Next, syllabus and marks distribution for the economics subject regarding the class 12 term 2 session 2021-22. Unit 1 is Unit 3, Unit 4 and Unit 5. And Unit 7, that is Unit 1 जो है बेटा, that is 3, 4 and 5. And Part A, that is the introductory microeconomics. Unit 1 जो है उसमें आपका Part A introductory microeconomics का जो है that is producer behaviors and supply. Total इसमें periods जो रहेंगे that are 30 periods and total marks is 10 marks. Unit 4, Unit 1 में जो chapter number 4 रहेगा that is forms of market and price determination. There are total 16 periods and marks are 10 marks. Next, chapter number 5, that is simple applications of tools and demands and supply curve. So total there are 16 periods and the total marks is 5 marks. So total periods are 62 periods and the total marks regarding the unit 1 is 25 marks. Next is your unit 2, that is part B, introductory macroeconomics. And chapter number 7 is determination of income and employment. Total periods are 27 periods and total marks are 7 marks. Next, chapter number 8, that is money and banking. Total there are 16 periods for this chapter, money and banking, and total marks are 6 marks. Next, chapter number 9, government budget and the economy. Total 16 periods and the total marks are 6 marks. Next, chapter number 10, that is balance of payments. Total 10 periods and the total marks are 6 marks. So here the subtotal of B, that is 69 plus unit A जो था that is 62. So 62 plus 69 that is ग्रैंड टोटल देखेंगे हम A और B का, यूनिट A और यूनिट B का जो ग्रैंड टोटल रहेगा बेटे that is 131 periods रहेंगे टोटल आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 के, and the total distribution of marks regarding the unit 1 and unit 2 that is 50 marks. Next is the syllabus for the political science for the class 12 regarding the term 2 session 2021-22. Time duration is 3 hours. Maximum marks is 50 marks. Part is politics in India since independence. Unit 7, Unit 8, Unit 9 and Unit 10. So total there are 4 units in Part A, that is the politics in India since independence. Unit 7, regional aspirations and conflicts. Total marks are 6 marks. Unit 8 is rise of new social movements. Total distribution of marks is 7 marks. Democratic upsurge and coalition politics. Total distribution of marks is 7 marks. Unit 10, recent issues and challenges. Total distribution of marks is 6 marks. Hence the total comes out to be for the unit number 7, unit 8, unit 9 and unit 10 is 26 marks. Next is your part B, that is contemporary world politics. Unit 15, South Asia in the First Cold War era. Total distribution of marks is 5 marks. Unit 16, international organization in a unipolar world, and the total distribution of marks is 5 marks. Unit 17 is security in contemporary world, and the total distribution of marks is 6 marks. Unit 18 is globalization and its
critics, and the total distribution of marks is 8 marks. Next is question paper style. What is the question paper style? For the political science subject, time is 3 hours, maximum marks is 50 marks. Question number 1 is, that is MCQ questions, will be of 10 parts, and each question carries 1 mark, hence the total distribution of marks is 10 marks. Next is matching type questions. It is a question number 2, will be of 5 questions, and each question carries 1 mark, and again the total distribution of marks is 5 marks for the question number 2. Next is the question number 3, and question number 3 is comprehension, will be of 5 marks. Sorry, not 5 marks, but 5 questions. Comprehension will be of 5 marks of 1 mark each. Hence the total distribution of marks is 5 marks. Question number 4 to question number 7 will be of 2 marks. 2 marks के रहेंगे ये. So total distribution of marks is 8 marks. Question number 8 and 9 will be of 3 marks. 3 marks के रहेंगे. So there are total 2 questions. That is question number 8 and question number 9, and each question carries 3 marks. So the total comes out to be 6 marks. Question number 10 and question number 11 will be of 5 marks. That means there are 2 questions. That is question number 10 and question number 11, and each question carries 5 marks. So the total comes out to be 10 marks. Question number 12 will be of 6 marks. Hence, question number 12 is the only one question, and this question carries 6 marks, and hence the total comes out to be 6 marks. So here the sum total for the political science subject, that is of 50 marks. So this is the question paper style for the पोल साइंस सब्जेक्ट. तो आज का जो बच्चे हमारा लाइव वीडियो लेक्चर में मेन टॉपिक था आज का, वो था आपका टर्म 2 सिलेबस 2022 फॉर क्लास 12 रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, पोल साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी. और इसमें आज हमने पेपर का स्टाइल, व्हाट इज द पेपर स्टाइल, एंड व्हाट इज द टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो कि आज के लाइव वीडियो लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट हम आपके साथ इन चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन विद अस आवर लाइव एपीएस क्लासेस.